Yes. Good afternoon, students. Now, today we'll be dealing the problems on deformation. In my previous lecture, as if you have just now saw, like I have explained you about what are the different formulas. Delta value when it is self weight is there, when axial load is there. So delta value when axial load is there, it is PL by AE. That is a standard equation which you have to remember it. I'll write it once again here. Delta value. So delta value which is equal to PL by AE. So this is the standard equation which you have to remember it. By this equation only, most of the problems now what are we dealing with, you can solve it. So I request the students to please first of all write the question and then we will solve it. So if you see with your first question, see questions और जब problems आ रहे हैं ना तो मैं बहुत आराम से like I'll teach you very slowly. Concepts भी आपको मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ. तो एक बार आपको समझ में आ गया ना, then I think you can be excel, like you can be perfect in that. So for the first problem, if you see, for the bar shown in the figure below, if cross sectional area, C by S is cross sectional area is 5 centimeter square and E is equal to 200 GPa, then determine, hello, it is not audible. Audible, sir. For the bar shown in the figure below, if cross-sectional area is 5 centimeter square and E is equal to 200 GPa, then determine deformation. Then determine deformation in the bar. You have to find out like what is the deformation in the bar. So can anyone do it? Yes. Can anyone do it? Yes. Please. Can anyone solve this Yes, sir. problem? सिर्फ आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, you have to find out the deformation. I'll give you the bar. So if this is the, I think you have already did this problem in your BTech. So here you can see we have 15 kilonewton load. Here we have 45 kilonewton load. Here we have 35 kilonewton load, and here we have 25 kilonewton load. And the length, even if you take it is 1 meter, this is 2 meter, this is 1 meter, A, B, C and D. Now if this is the bar which is actually there, in this bar when you apply certain loads, when you apply the loads 15, 30, 35, 45, whatever loads you apply, तो इसके वजह से क्या होता है, it might like elongate. ये ऐसा खींचने से आपको क्या होता है, it might elongate or it might compress. It might be anything, yes or no. तो ये elongate तो हो सकता है, ये compress तो भी हो सकता है. तो ये कितना हो रहा है, elongate हो रहा है या compress हो रहा है, तो कितना हो रहा है, that we have to tell. So if you can solve, please let me know. I'll just wait for a minute. You can try it or I'll solve it. No problem. Yes. Should I solve or should I wait? Should I solve? Yes, Yes, sir. sir. Okay, no problem. Now in this one, whenever we take such type of a problem, I request the students to please draw free body diagrams. Draw free body diagrams. So यहाँ पे क्या होता है? If you can see, even at the junction, like at point B or at junction C, we have internal forces. Yes or no? We have internal forces of 35 kilonewton and 25 kilonewton at your junction B, at your junction C. So what we'll do is, we'll first of all, we'll draw a free body diagram. Separately we will draw and then we will go with the answer. Now if you see with the free body diagram, how can we do it? पहले हम एक बॉक्स लेते हैं, fine, then we take with our second one and then we'll go with our third one. So these are the three things which we have, fine.
Now on the first box, if you see, first one, you let us write as 1, 2, 3. Fine. Now on the first one, if you see, what is the force which is there? 15 kilonewton force is available here. Yes. Is it a tensile or compressive force? Is it a tensile or compressive force? 15 kilonewton, is it a tensile or compressive? It is a tensile force. If 15 kilonewton tensile force is applied here, then if this first section, it should be in an equilibrium, then I have to apply same 15 kilonewton load here also. Yes or no? Then only I can tell that yes, it is in equilibrium. If suppose you can take, this was point B, this is also your point B. If this is my 15 kilonewton load on this junction B, if you see, if 15 kilonewton load is applied here, then I think 15 kilonewton load यहाँ पे भी होना चाहिए, but in an opposite direction. Yes, but in an opposite direction it should be there. But यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए, what is the actual force which is there at point B? The actual force at point B is 35 kilonewton. Now this 35 kilonewton, is it acting compressive or is it acting tensile? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप. So this is my 35 kilonewton load which is actually there. Yes or no? यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? This 15 is there, this 35 is there. So you have to just remember that whenever a tensile force is there, we take it as positive. Whenever we have compressive force, we take it as negative. ये आपको याद रखना है. Why? Because I have to find out my total force. मुझे total force निकालना है यहाँ पे. So if I wanted to find out my total force, तो total force आपका compressive रहेगा या tensile रहेगा? तो यहाँ पे देखो आप, तो मैं arrow नहीं लिखता हूँ. I am not writing any arrow. So if this is my total force, so what is the total force? Is this 35 acting as a compressive or tensile? Is it acting as compressive or tensile? Is it acting as compressive or tensile? हाँ, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 35 minus 15 लगाओगे तो कितना total force आएगा हमारे कन? We will be getting, what is the total force we will be getting? So 35 minus 15, if you take, we are getting 20, and the direction should be inside. Why? Because इसका ज्यादा लोड है ना 35 का. 35 load, you can see 35 minus 15 if you do, so 20. This is plus 20, you can write. This is plus 20 kilonewton. So actual load on year B portion for year second one, यहाँ पे कितना फोर्स है हमारा? 20. तो यहाँ पे भी कितना फोर्स रहेगा? 20. If this is 20, please carefully आप देखिए यहाँ पे, this is 20, so on my C portion here also it should be 20. Yes or no? बराबर है ना? अगर यहाँ पे 20 फोर्स आ रहा है, मुझे सब कुछ इक्विलिब्रियम में बनाना है. I have to prepare everything into equilibrium. So at junction C, this is also at 20 kilonewton, it should be there. But what is the actual load? Actual load, if you see here, actual load is 25. But if you see with here, actual load is 25. Then what will be my total load if you see here? Then what will be my total load here? Yes, can anyone tell? What will be my total load? Yes, यहाँ पे लिखूंगा मैं नीचे. So total load क्या रहेगा यहाँ पे? फिर अभी ये भी 20 टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ये भी 25 टुवर्ड्स राइट ही जा रहा है ना, दोनों भी टुवर्ड्स राइट ही जा रहे हैं, आप देख सकते हो. तो कैन आई ऐड बोथ? So 25 plus 20 which is equal to 45. So if this is 45, then what is the actual force here we have? Then what is the actual force we have? Then the actual force we have, तो actual force यहाँ पे देखो आप 45 है ना, तो ये 45 आ गया इक्विलिब्रियम में आपको आंसर. Yes, you have got the answer I think now. 45 and 45. Sorry, this direction should be inside. Sorry. बाहर में अंदर आना चाहिए. Fine. So जो 45 kilonewton यहाँ पे था, so on this member we have to get 45. So at junction D, if you see, we have to get 45. So this is the, like we call it as free body diagrams. So on the first portion you can see what is the load now? 15 kilonewton. Now what is on second one? What is the actual load? 20 kilonewton.
On third one, what is the actual load? 45 kN. Yes or no? Now, when we have got our actual loads, now when we have got with our actual loads, we have to find out our deformation. Yes or no? Deformation हमारे को find out करना है. So if you want to find out your deformation, which is delta, delta for AD complete A से लेके हमारे को D तक चाहिए, which is equal to PL by AE. This is for the first one. So I will be writing it as P1 L1 by AE is common, then plus P1 sorry P2 L2 by AE plus P3 L3 by AE. So can I take 1 by AE common? Can I take 1 by AE common? Yes, I can take. Then I Yes, can write sir. as P1 L1 plus P2 L2 plus P3 L3. Yes, that is correct. Then if you talk about here P1 L1, P1 L1 अभी ये काम को आएगा बेटा, आपको टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है, आपको माइनस में लिखना है या आंसर पॉजिटिव में लिखना है, आपको वो आपको यहाँ पे काम को आएगा. P1 L1. Fine. Now on this first portion, if you see on your first portion, on the first portion, is it acting as a tensile force or is it acting as a compressive force? Is it acting as a tensile force or is it acting as a compressive force? Tensile. हाँ, तो टेंसाइल के लिए क्या करना है हमारे को? टेंसाइल Negative. के लिए हमारे टेंसाइल यहाँ पे देखो Positive. positive. So what we have to do is 1 by AE was common into P1 क्या है हमारा 15 into length L1 is 1 meter. Yes or no? 15 into 1 plus no P2 L2. No P2 L2 देखो P2 का टोटल फोर्स क्या है हमारा 20 किलोमीटर लोड है. Yes or no? 20 किलोमीटर लोड. Same here also we have 20 kilometer load. Now is it a tensile or a compressive force? Now is it a tensile or a compressive force? Compressive. Yes, it is a compressive. Then should I take negative or positive? Negative. Then I should take negative or positive? I have to take negative. Yes or no? So minus 20 into what is the length we have? 2. Yes or no? Similarly plus. Now if you go with here P3, P3 का एक्चुअल लोड क्या था हमारा 45. यहाँ पे भी 45 है. Is it a tensile or a compressive? It is also a compressive force. Yes or no? It's a compressive force. Then again we have to go with our negative. So minus what is the total force we have? 45 into length was 1. Into length was 1. See how easy the problem is. दिखने के लिए टफ दिखता है, but बहुत easy है. Fine. So you can just multiply all this. So multiply all this and tell me what is the total answer you will be getting. And you have to even multiply with A and E. You have to even multiply with A and E. Multiply with A and E. And can anyone tell me with delta AD value? Yes. Do it fast. I'll also do it. You don't worry. But you also have to do it. So delta, if you see delta AD, which is equal to 1 by AE into 1 by AE into what is the answer we have here? 15 minus 20 into 2 is 40. This is minus 45. Yes or no? Means minus 45 minus 40 minus 85. Minus 85 plus 15. कितना हो गया? minus 85 plus 15 plus 70 हो गया ना? Yes or no? Plus 70. Sorry, minus 70 हो गया. So this is my minus 70. So I have to substitute with my AE value. So let us calculate AE पहले. AE का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, if you want to find out here AE value, so what will happen? What is A? What is E? You have to know. What is A value? We have 5 centimeter square was given to you. 5 centimeter square. यहाँ पे देख सकते हो आप. Area was given as 5 centimeter square. But whenever we take deformation, जब भी आपको deformation बताएंगे ना, why I always tell you to go with mm or Newton. Why? Because deflection या deformation बहुत कम रहते. 0.1 mm, 0.2 mm ऐसा आ सकते हैं. अगर आप मीटर में लोगे ना तो आपका आंसर कैसा आएगा? 0.0001 ऐसा आ जाएगा. तो उससे अच्छा है कि we'll go with our mm. Now if we convert my 5 centimeter square into mm, so I think we'll be getting it as 5 into 100 mm square, which is 500 mm square. Fine. So we have got with our A. Now if you talk with your E, which is equal to 200 GPa, 200 gigapascal. Now can anyone tell me how? Yes, tell me. सर वहाँ 10 चाहिए, 5 into 10.
mm square. ओके सर. आपको कन्वर्शन पता हो गया या बताऊं? नो सर, एक्चुअली स्क्वायर नहीं कंसीडर किया था मैंने इसलिए. हाँ, तो सेंटीमीटर नहीं बताया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दो बार 10 × 10 करोगे तो आपको 100 आएगा इनसे. तो इसलिए यहाँ पे 500 आता है. सिमिलरली इफ यू गो विथ योर ई वैल्यू, नो ई वैल्यू इफ यू इवन सी इट इज इक्वल टू 200 GPa, gigapascal. Now can anyone convert this one and can tell me the value please? In I need the value in mm. Yes. Can anyone tell me the value in Newton per mm square? Fast. Gigapascals, Newton per mm square. Do it. 200 into 10 to the power 3. Yes, very good. 2 into 10 to the power 5. Good. वहां पे दो जीरो जो थे 200 के आगे वो जीरो फॉर 5 हो जाएगा आपको. फाइन, वेरी गुड. सो वी हैव गॉट ए वैल्यू, वी हैव गॉट ई वैल्यू, बोथ द वैल्यूज आई थिंक वी हैव. सो आई थिंक ए ई वैल्यू चाहिए आपको, ए ई की वैल्यू चाहिए. तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर. तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड टेल मी व्हाट इज योर डेल्टा एडी. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय डेल्टा एडी वैल्यू? यस, फास्ट. Anyone can tell me delta AD value? I just need delta AD value. What is the total like delta AD value I've got? Let me do it or you will do it. Let me do it or you will do it. Yes. तो यहाँ पे अगर आप AE का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आया मुझे 500 into 2 into 10 to the power 5. Yes or no? ये कितना हो जाता? 5 into 2 is 10, 10 to the power 5 था. तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये 10 to the power कितना हो जाएगा? ये इसको सिंप्लीफाई करो ना अभी आप. You can just simplify this one and you have to tell me the answer. Yes, can anyone answer? 10 raised to power 8. 10 raised to power. ये ए दोनों भी सेम है क्या? देख लो आप. बोथ द वैल्यूज शुड बी सेम. ए एंड ई बोथ द वैल्यूज इट हैज टू बी सेम. ए का वैल्यू कितना आया था मार्कन? 500 आया था. एंड सिमिलरली ई वैल्यू वी हैव गॉट इट एज 2 into 10 to the power 5. सो 2 into 10 to the power 5 वो कैंसिल हो गया. तो आपको न्यूटन पर एम स्क्वायर बराबर. हाँ, तो ये ए का वैल्यू है. इसके अंदर 1 by ए इज 10 to the power 8 into we have got 70. Fine. But you have to check with the value of this one whether this value is in Newton, kilonewton, meter or whatever. तो उसको आपको चेक करना है. You have to check this value and then you have to substitute. So AD का वैल्यू अगर आप इसमें ये 70 क्या है बेटा? What is this 70? This 70 is my kilonewton. This 70 is my kilonewton. Yes or no? This 70 is the kilonewton force. ऐसा क्यों हो रहा है? Voice, is it audible? Hello. Yes, sir. ये मूव नहीं हो रहा है बट फोन में मूव हो रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, ओके. देन AD वैल्यू इफ यू जस्ट कैलकुलेट इट, आई गॉट एन आंसर एज 0.7 mm. अगर आप प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करोगे तो द आंसर आई हैव गॉट वाज -0.7. दिस माइनस इंडिकेट दैट दिस इज इनटू अ कंप्रेसिव फोर्स. आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है. तो इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर द आंसर विल बी हियर -0.7 mm. So for a similar problem, for the same problem, you have to draw same second question you can write for above problem
draw axial thrust diagram. Axial thrust. Now I don't know how many of you have learned about your axial thrust diagram. Now what is axial thrust diagram? Fine, axial thrust diagram is nothing. Axial thrust मतलब है कि एक्चुअल उसके ऊपर वो मेंबर के ऊपर लोड कितना है. जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, when you draw a free body diagram, then what is the actual load on that one? So here if you see the free body diagram already you have drawn. Fine, and from this one I can tell what is the actual loading on each and every member on first section, on second section, on third section. So on first section, even if you see it is 15 kilonewton, so you just draw a straight line first of all. एक आपको straight line draw करना है, and then as I said you, if it is into a tension or if it is into compression, you have to see this value. If it is into your tensile, you have to go with your positive. If it is into your compression, it will be your negative. So as I have given you about your free body diagrams, so all the three you can see for the first section, for the second section, and for the third section, I have given you your free body diagrams. Now using this free body diagrams only, you have to draw with your axial thrust diagram. Fine. तो यहाँ पे कितना लोड आया था पहले इसमें अगर आप देखोगे तो we have got a load of 15 kilonewton, and for the second section if you see what the total force we have got 20 kilonewton, and third one if you see we have got as 45. But first one is my compression or tensile, you have to take. It is my tensile. So if it is tensile, you have to take positive. If it is compression, we have to take it as negative. Second one, if you see, second one is the tensile force or compressive force. It is a compressive force. Yes or no? And third one also, if you see, it is a compressive force. So to draw your axial thrust diagram, so this will be an axis. Above axis, you will be having positive. Below axis, you will be having your negative. So above axis, if you see, first section, if you see, we have 15 kilonewton, which is going up. So from year A till year B, again it is same, 15 kilonewton only we have. At junction B, you can see, at junction B, till from A to B, it was 15 kilonewton only. But from B to C, when you go, this is the second member we have. So at the second member, the force is a tensile or compressive. It is a compressive force. What is the total force we have? 20. So as I said, if it is a compressive force, we have to come downward. So यहाँ से आपको ये 15 आ जाएगा. From here slowly you have to come it as down. So ये आपका 15 kilonewton का force हो गया. Now from this one, this 15 is for your AB member, yeah, section 1, first section. But from this one, as I said to you, we have 20 kilonewton load, which is a compressive force, which will come downward. So ये आपका हो गया 20. तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप total force calculate करोगे, तो 20 plus 15, it is equal to 35. So question में अगर आप देखोगे, तो we'll be having 35 kilonewton load. So that should be there. So this is the one. So slowly we will continue with our second portion only till my point C. So here somewhere it was point C. So at point C only if you see. So at junction C, fine. From C to D if you go, this is my third junction. At the third junction, what the total force we have? Total force we have is 45 kilonewton. Total force we have is 45 kilonewton. So if you see, already I have 20 kilonewton load here. Already I have 20. So plus 25 if you take downward. So this is my total. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया बेटा? So this is my 45 kilonewton. So this diagram, whatever we have got. So this diagram is my axial thrust diagram. So as I said, you have this as positive, this as my negative. Fine. तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है. Many times in your examination, he is asking us to go with our axial thrust diagram. Now, if you see with your axial thrust diagram, this is the very simple method to draw with your axial thrust diagram. तो ऐसा आपको axial thrust diagram आपको बनाना है. Now, from the same axial thrust diagram, he will even ask you. Fine. In this question only, I think I'll give you with your question 3 if you want. Question 3. From the above problem, find maximum tensile stress and maximum compressive stress. ये दो हमारे को फाइंड आउट करना है. देखो सेम प्रॉब्लम कितने बार कंटिन्यू हो रहा है. फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम
find maximum tensile stress and maximum compressive stress. We have to find out maximum tensile and maximum compressive. I just kept a axial thrust diagram here. यहाँ से if you see from this diagram, so what is the like maximum tensile and what is the maximum compressive, you can tell. ऊपर का पोर्शन जो भी है हमारा इट्स अ टेंसाइल फोर्स, बिलो पोर्शन इज नथिंग बट वी हैव आवर कंप्रेशन फोर्स. सो ऑन माय टेंशन फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना है अमरकन? यस, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन माय टेंसाइल साइड? 15. यस, सो हाँ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का क्या है? लोड अपॉन इट्स एरिया है ना बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन इट्स एरिया. बट मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं अभी क्या होता है. इसके अंदर ही अगर आपका और एक डायग्राम अगर आता था उसका वैल्यू 15 से ज्यादा होता था तो आपको वो ज्यादा वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू. तो आपको मैं नीचे केस में बताऊंगा कंप्रेशन. फाइन, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स क्या है हमारा? 15 किलो न्यूटन बाई एरिया तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुके हैं आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आपको कैंसिल होता है तो यू विल गेट इट एज 3 किलो न्यूटन पर. यूनिट्स आप चेंज कर ले सकते हो. आप, मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, क्वेश्चन में ऑप्शंस के हिसाब से आपको आपकी यूनिट्स चेंज कर सकते हो. ओके, सो सिमिलरली सेकंड वन वाज मैक्सिमम compressive stress. Now if you come with your maximum compressive stress, in this one we have two compressive forces, yes or no? One compressive force is 20, the other compressive force is 45. So what is he asking? He is asking us maximum. So what should we take? Should we take 20 or 45? Should we take 20 or 45? We have to take 45. 45 by again 3, so which is equal to 9 kilonewton per centimeter square. Now is this problem like complete problem? Is it okay with you? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यही प्रॉब्लम आपको डीबा 2 में थे रेगुलर. हाँ 15 आएगा ना? हाँ सॉरी 15 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज 15 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां से आप देख सकते हैं. फाइन, हाँ बोलो बेटा. सर एरिया 3 कैसे? एरिया क्या दिया था वो? 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे 5 आना चाहिए तो तभी 9 आएगा ना आपको. 5 9 45. यस, तो इसलिए आपको मैंने 9 लिखा था. फाइन, सो वी हैव 9 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज माय मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो यही क्वेश्चन आपको मतलब इन अ डिफरेंट फैशन ही माइट गिव यू. ही माइट आस्क यू ओनली एक्सियल थ्रस्ट, he might ask you the deflection, or he might even ask you the maximum tensile or compressive stress. This is okay with everyone? Yes? Yes, Yes, sir. sir. If it is okay, then shall we go with our next problem? Shall we go Yes, with our sir. next problem? We'll write down the next problem. So, fourth one you can take. Now, in this fourth one, for the fixed bar shown in the figure, determine support reaction. Determine support reactions and also draw axial thrust diagram. Now here AE is constant, A and E is constant, so A and E you can just neglect it. Wherever you are getting A and D, you can just neglect it, and you have to find out the support reactions. You have to find out. Similarly, you have to draw with your axial thrust diagram. आपको मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ. This is my fixed pole. On both the sides, it is fixed. Again, we have both the members. Now, on this one, if you see, we have here we have RA. Here we have RD, here we have P, and here we have 2P. The length is L by 3, L by 3, L by 3. A, B, C, and D. Yes, now please think in what way we can solve it.
First of all, see the question properly. Draw free body diagram. पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, उसके हिसाब से ही आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. क्वेश्चन कॉपी कर लिए सभी लोग? यस. आई नीड एन इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड, बॉयज एंड गर्ल्स. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, बट प्लीज डोंट सिट आइडली. ये आपका रेगुलर क्लास नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है. आपको यहाँ पे एग्जाम पास नहीं होना है, यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं रहेगा ना. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, बट प्लीज ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट. हियर वी आर टेलिंग यू दैट ओनली. छोटे से छोटा भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो पहले कॉन्सेप्ट देखिए, देन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ इफ यू हैव कॉपीड विद दिस डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. Draw free body diagram. Now let us draw with a free body diagram. Yes, shall we go with a free body diagram? Yes, okay. Now if you see with a free body diagram, as you know, we again have three boxes. This was my first one, this is my second one, and this is my third one. So on this one, if you see with the diagram, from the diagram what can I see is here RA, and this is my RD, and here somewhere it is P, and here somewhere it is 2P, है ना. somewhere here it is P, somewhere here it is 2P. fine. So यहाँ पे आप देखिए, तो ये RA, we'll start with our RA first. So if you see with our RA, so here I have my RA. If here I have my RA, here also I think I should have my RA. Yes, yes or no? Here also I should have my RA. If here I should have RA, then to have this member, why? Because this is my point, like section B. सेक्शन बी. सो यहाँ पे अगर आपको बी सेक्शन का आ रही है, तो सेम सेक्शन बी का नहीं, आपको यहाँ पे भी आर ए ही होना चाहिए. यस और नो? बट इफ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, दिस हैज टू गो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वही तभी आपको इक्विलिब्रियम में रहता है, नहीं तो आपको इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है. बट एक्चुअल फोर्स क्या है? बट एक्चुअल फोर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक्चुअल फोर्स ऑन द पोर्शन विच इज इक्वल टू पी, but actual force on that member is equal to P. So what we have to do is we have to find out our total force. So let us see. So total force, what can be the total force? We have to see that. So the total force, if you see, this is here, you can write total force. एक towards right जा रहा है, एक towards left जा रहा है ना. एक towards, आप देखो, एक towards right जा रहा है, एक towards left जा रहा है. तो RA we have to take, so which is equal to here RA, which is going towards here left, minus we'll be having with our P. So this is my total force which is going towards here right. So RA minus P, first force. If this RA minus P is there, so here also it should be RA minus P only. Yes or no? RA minus P only. If this is RA minus P, then to make this into equilibrium, अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में बनाना है, if this force, if you just wanted to make it into equilibrium, then what we have to do? ये डायरेक्शन देखो आप, RA minus P ये राइट में जा रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा. क्यों? मतलब RA का ज्यादा रहेगा ना P वैल्यू से. RA का वैल्यू जो आपका रिएक्शन है, वो रिएक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो इसलिए मैंने RA लिया है. RA में से मैंने P निकाल दिया है. So from RA I have just removed it as P. Fine. So RA minus P, RA कहाँ जा रहा है? आप towards left जा रहा है, तो ये towards right जाना चाहिए ना. This direction should be towards here right. Yes or no? तो ये अगर आप देखोगे तो towards right आ जाएगा, तो ये आपको रहेगा towards left. Sorry. RA के डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा. Whatever RA force was there, in that direction we will be having that force. Why? Because RA reaction is there. Reaction कैसा रहता है? Reaction ज्यादा रहता है ना इससे. तो RA force will be more. So to make it into a balanced fashion, so this is here RA minus P, तो यहाँ पे भी आपको RA minus P होना चाहिए. If this is towards right, which is RA minus P, तो इसका डायरेक्शन भी कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, which is again RA minus P. Now similarly, what is the actual force which is there? What is the actual force on this member? If you see, the actual force is 2P. Yes or no? The actual force is 2P. If the actual force is 2P, then what should be my total force? Now if you see with my total force,
total force should be equal to my 2p minus of Ra minus P. So which is equal to, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो total force which is equal to 2p minus of Ra minus P. तो 2p minus P हो गया तो क्या आता है अपने को आंसर? अपने को आंसर क्या रहता है? 2p minus P. If you just see, so what we will get? हेलो बट सर. यहाँ पे हाँ, तो 2p माइनस ऑफ Ra माइनस माइनस प्लस ऑफ P, तो यहाँ पे होता है 3p माइनस Ra. So the total force here we have हेलो is सर. 3. हेलो सर. Yes. सर आर ए माइनस माइनस में पी. आवाज हेलो. ब्रेक हो रहा है आपका. Yes, yes, tell me. हेलो सर, माइनस में नहीं आएगा ना सर? आर ए माइनस पी टेंजाइल है ना? कौन सा बेटा? आर ए माइनस पी. हाँ, तो Ra माइनस P लिखा ना मैंने. हाँ सर, माइनस में नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना? कौन सा बता रहे हैं आप? सर आपने जो लिखा है ना 2p माइनस आर ए माइनस पी, वो जो माइनस है वो पॉजिटिव होना चाहिए. ये पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ सर. तो यहाँ पे आप देखिए ना, एक टेंसाइल है, एक कंप्रेसिव है. एक टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, एक टुवर्ड्स राइट जा रहा है ना. जो लेफ्ट जा रहा है वो नेगेटिव लेते हैं, जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव लेते हैं ना. टुवर्ड्स राइट इफ इट इज गोइंग, what we take it as positive. Towards left if it is going, we'll take it as negative. सर हमने पहले कंडीशन में उल्टा किया है. कौन सा पहला कंडीशन? एट बी, पी माइनस आर ए चाहिए फिर. इसमें? यस सर. तो इसमें आप देखो ना, इसलिए मैं आपको फिगर डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल आपको बता देता. दिस इज माय फर्स्ट वन. सेपरेट सेपरेट दो डाल रहा हूं मैं सिर्फ. हाँ, ये पहले Ra आया था, तो इसको काउंटर मैंने Ra डाला है टुवर्ड्स राइट, है ना. तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कहां पे रहेगा? ये यहाँ पे रहेगा Ra. यस और नो? ये यहाँ पे रहेगा. बट एक्चुअल P कहां पे था? एक्चुअल P अगर आप देखो, ये तो एक्चुअल P कंप्रेस कर रहा है. एक्चुअल P हमारा कंप्रेस कर रहा है ना. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, हेलो, सुने आ रहा है? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बट मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये जो रिएक्शन का फोर्स है, ये रिएक्शन का फोर्स P से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? फ्रैंकली अगर आप चेक करोगे तो ये 2p रहेगा या P रहेगा. आपको मैं इसलिए बता देता हूं, यहाँ पे टोटल रिएक्शन आपकी अगर निकालना है तो समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 विल सी. समेशन ऑफ यही प्रॉब्लम है. इसी में ही अगर आप देखोगे, समेशन ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0. तो समेशन ऑफ f ऑफ x का मतलब है कि द फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स योर राइट विल टेक इट एज पॉजिटिव, व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट विल टेक इट एज नेगेटिव. तो समेशन ऑफ f ऑफ x अगर आप निकाल रहे हो, टुवर्ड्स राइट जा रहा है ना, तो ये माइनस Ra, ये क्या है हमारा? प्लस P, ये क्या है हमारा? प्लस 2p, ये क्या है हमारा? माइनस Rd should be equal to 0. From here you can Ra and Rd you can send. Ra plus Rd is equal to 2p plus p. कितना है हमारा? 3p. yes or no? ये देखो आप, तो यहाँ पे अगर आप चेक भी कर रहे हो तो भी आपको मैं आई जस्ट वांटेड टू शो यू लाइक हाउ यू कैन रेक्टिफाई. तो अगर आपको Rd जो आपको चाहिए था, तो व्हाट शुड बी Rd? Rd शुड बी 3p माइनस Ra. yes or no? तो मुझे क्या आया आंसर? 3p माइनस Ra. समझ में आया आपको? यस. यस सर. आपको खुद को ही चेक कर सकते हो आप कि हमने करेक्ट किया है नहीं. तो इसलिए आप समेशन ऑफ f ऑफ x ले सकते हो. सो फ्रॉम समेशन ऑफ f ऑफ x यू कैन फाइंड इट आउट वेदर द प्रॉब्लम व्हिच वी हैव डिड इज करेक्ट और रॉन्ग. अगर आप यहाँ पे p माइनस Ra लेते हो ना, तो यहाँ पे भी p माइनस Ra हो जाएगा और ये गलत जाएगा. You will not get this answer. 3p minus, why? Because see here you can see, अगर आपको Rd चाहिए ना, तो Rd is equal to 3p minus Ra. It has to come. क्यों? मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है. फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली आई हैव फाउंड आउट
then RD is equal to 3P minus RA. So the same answer I have got at this junction. So at this junction, even if you see what is the answer I have got, so this is my 3P minus RA. Fine. If this is my 3P minus RA, then I think it is easy. तो आपको अभी 3 diagrams है आपके. You have like RA, like you have first member, you have second member, you have third member. Now you can go with your delta. Delta आपको find out करना है, which is delta AD, which is equal to delta of AB plus delta of BC plus delta of CD, which is equal to PL by AE, which is equal to PL1 by A1 E1. Similarly, P2 L2 by AE, AE is constant, उसने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था. Similarly, plus we have P3 L3 by AE. So I think you can substitute here. आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. P1 का आपको पता है, P1 क्या है यहाँ पे? What is P1 here? What is P1 here? P1 is RA. No, P1 is RA. What is L1? L1 is L by 3. What is P2 here? P2 here is RA minus P. RA minus P. What is L2? L2 is again L by 3. Now what is P3 here? P3 is 3P minus RA. Into what is L3? L3 is what is L3? L3 is L by 3. Fine. Then you have to substitute all the three and tell me what is the value of RA and RB. And tell me what is the value of RA and what is the value of RB. You have to find out the value of RA and RB. आपको नहीं होता है तो I'll solve. Don't worry. I'll solve the problem. So this equation, please do remember it. ये आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा. मतलब ये इक्वेशन. तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा AD if I find out what is A and D, as I said you, 1 by AE, I think I can take it as common. Now P1 L1, if you take, what is P1 L1? So P1 L1, if you take, what is P1 L1? P1 is RA. What is L1? It is equal to L by 3. Yes or no? Plus, what is P2 L2? मैं आपको भी बता रहा हूँ कि you have to even see whether it is a compressive force or whether it is a tensile force. वो कंप्रेसिव फोर्स है या वो टेंसाइल फोर्स है, आपको देखना पड़ेगा. फाइन. अगर वो कंप्रेसिव रहा तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. क्या करना चाहिए? टेंसाइल रहा तो आपको मैंने यहाँ पे बताया. टेंसाइल रहा तो पॉजिटिव. टेंसाइल रहा तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव रहा तो नेगेटिव. नेगेटिव. Yes or no? So that you have to remember it here also. When you solve the problem, so here you have to remember it. So पहला जो पोर्शन था हमारा पोर्शन था टेंसाइल. तो टेंसाइल था तो इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया है यहाँ पे. सेकेंड वन इज माई टेंसाइल और कंप्रेसिव. अगेन इट इज अ टेंसाइल फोर्स, so again I can take positive plus. What is my P2 value? P2 value is equal to my क्या गया, कहाँ पे गया वो, RA minus P into this is again L by 3 plus what is the third one if you see third portion. So third portion if you see this is my compressive force. If this is my compressive force then I have to take it as minus of whatever I have. क्या है हमारे को? 3P minus RA into L by 3. So this is my total. A and E कैसा आपको पता ही है, it is constant, so you can remove AE if you want. So what are we remaining with? You have to just find it out. So we are remaining with my RA into like RAL by 3 plus क्या आ जाएगा यहाँ पे? RAL by 3 minus PL by 3. ये क्या हो जाएगा आपको? माइनस 3PL by 3 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपको RAL by 3. ये देखो आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दिस टर्म्स, फाइन, सो व्हाट वी हैव टू गेट इट, यस और नो. बट एज यू सी द डिफ्लेक्शंस व्हाटएवर वी हैव गॉट, फाइन, एज दिस मेंबर, मैंने आपको यहां बताऊंगा. हाँ, दिस मेंबर, इज इट अ फिक्स्ड बीम और द मेंबर इज फ्री टू एक्सपैंड? कैन एनीवन टेल मी? फिक्स्ड. हाँ, तो इफ इट इज फिक्स्ड बीम, ये एक्सपेंड हो सकता है क्या बेटा? नो. 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 देन व्हाट कैन वी राइट हियर?
Now can I write delta AD is equal to delta AB plus delta BC plus delta CD, which should be equal to 0? Why? Because it is not free to expand. It can't expand. Why? Because it needs to be. वो नहीं हो सकता है. Yes or no? Then whatever you have got, this should be equal to 0. तो यहाँ से मुझे RA फाइंड आउट कीजिए आप. Why? Because we have only RA. आप देख सकते हो. We don't have RB anywhere. We don't have RB और RD anywhere. हमारे पास RA और RD कहीं पे भी नहीं है. तो अब देखो ये RAL/3 plus RAL/3 plus RAL/3. What can I write? Can I write as 3RAL/3? Yes, I can write. Yes or no? Similarly, we have minus PL/3 minus 3PL/3. ये 3 and 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस PL/3 माइनस PL, तो कितना हो जाएगा? माइनस PL/3 माइनस PL. एलसीएम निकालो आप. सो 3 and 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो वी हैव RAL माइनस PL minus 3PL/3 is equal to 0. So RA into L minus PL minus 3PL is minus 4PL/3 is equal to 0. So RA into L. तो ये अगर आप वहां पे भेजोगे तो 4PL/3 L and L will get cancelled. So what is the answer of RA, which is equal to 4P/3? Is it visible? ये इतना हम इसलिए सॉल्व नहीं करते बेटा. ये छोटी बात जो रहते हैं ना एलसीएम, तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर देते रहता हूँ. इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो कंप्रेशन में मैंने माइनस 0.7 दिया है. यहाँ पे हमारे को ये टाइम वेस्ट नहीं करना है. ये आप ही घर पे बैठ के कर सकते हो ना. ये कितना छोटा है. ये अभी अगर आपको इतनी डिटेली पढ़ाते जाऊंगा ना तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा मेरा. I am telling you, I can't finish my syllabus. It is very impossible. Fine. So directly we will be giving. So if you have got with your RA, what can anyone tell me what is your RD? Yes, can anyone tell me what is your RD? Yes. Do it fast. Can anyone tell me what is your RD? RD कितना है बेटा? RD I got as 5P/3. You can just check it out. Why? Because I have given you the equation. R यहाँ पे कहाँ गया equation? यहाँ पे दिया था ना. हाँ, ये RA plus P plus 2P minus RD. So RD क्या था हमारा? RD was equal to 3P minus RA. So RA already you have got. So I think you can substitute your RA 4P/3. So 3P. So here यहाँ पे देखो 3P minus 4P/3. So the answer will be equal to 5P/3. Similarly, in the same question, he is even asking us to find out or to draw the axial thrust diagram. You have to draw the axial thrust diagram. Now, if you want to draw the axial thrust diagram, for the first member, you know it is equal to 4P/3. RA का था ना, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ये कितना आया था मुझे? 4P/3. यहाँ पे P, यहाँ पे 2P और यहाँ पे 5P/3 है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दिस पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, इज इट ए टेंसाइल और ए कंप्रेसिव? Is it a tensile or a compressive? Is a tensile force. So this is equal to 4P/3. Same B तक जाएगा. From B to C अगर आप BC के जंक्शन में देखोगे तो P है ना, तो 4P/3. यहाँ पे भी हमारा टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो टेंसाइल फोर्स 4P/3 minus P/3 is here. 4P/3 minus P is here P/3. So this answer from here till here it is P/3. So slowly it will continue till third portion. From this one, if you see, we have got a compressive force in this one. Yes or no? यहाँ तक हमारा टेंसाइल था. यहाँ पे अगर आप पोर्शन में देख रहे हो तो कंप्रेशन में आएगा, तो वो नीचे जाएगा. फाइन. सो हियर वी हैव गॉट एन आंसर एज 5P/3. दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव. Fine. This is my axial thrust diagram. Now I think from axial thrust diagram, can anyone tell me what is my maximum tensile stress and what is my maximum compressive stress? Yes, can anyone tell me what is my maximum tensile and compressive stress? Yes. What is maximum tensile stress? Can I write as 4P/3 is my maximum like tensile stress? What is my maximum compressive stress? Can I write as 5P/3? एरिया नहीं दिया ना क्वेश्चन में हमारे को. एरिया अगर आप देखोगे A and E is constant in the question he has given. A and E is constant, तो इसलिए P/A area is constant. So that is the reason
by 3 and 5p by 3. So this is the answer which you have to remember it. You have to remember it. Yes or no? तो ये देखो प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ा दिखता है बट बहुत आसान है. It is really very simple. So here I think we can just take a small break and again we'll continue very shortly.